Hello everyone. Here we are going to study a very most important topic which is called glycolysis. It is a very important topic for any other competitive exam like GPET, नीट एग्ज़ाम. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ग्लाइकोलिसिस. उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, कहाँ पे होता है, कितने एटीपी सिंथेसाइज होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ग्लाइकोलिसिस. इट इज़ अ वेरी सिंपल फंडामेंटल cycle, glycolysis cycle. Then we are first going to start what is glycolysis. It is a sequence of reactions which is converting glucose or glycogen to pyruvate or lactate with production of ATP. मेनली पता है ग्लूकोज इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर लिविंग सेल. किसी भी चीज़ को ग्लूकोज एनर्जी बहुत ज़रूरी है, खास करके हमारे ब्रेन को. सो इट इज़ मेनली वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल पाथवे ऑफ एनी लिविंग सेल. इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज विच इज़ कॉल्ड ऑल्सो स्वीट और सुगर. एनी ग्लाइकोज मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, starch, or any glucose molecules like glucose, fructose, and lysis means dissolution or breakdown. So it is a universal pathway in a living cell. The pathway is also known as Embden-Meyerhof pathway because it is synthesized or researched by particular honor of two biochemists who made a major contributions to the knowledge of glycolysis. So the glycolysis, it is a mainly entry of glucose into the cell. When our body needs energy, that time the store of glycogen is converted into glucose and they provide energy to our body. So the entry of glucose into the cell, it is mainly depend on specific transporter system which is recognized by mainly two phase insulin dependent transporter system of glucose or insulin independent glucose transporter system. The glucose transporter are mainly 5 types: glucose 1 to 5 and GLUT7. GLUT 1 to 5 and GLUT7. GLUT 1 is abundant in erythrocyte where GLUT 4 is abundant in skeletal muscle and adipose tissue. We all know that. The number and promotes activity of GLUT 4 in skeletal muscle and adipose tissue in type 2 diabetes mellitus. So the glycolysis, it is a mainly sequence of reactions that convert glucose to pyruvate in a aerobic conditions or lactate in anaerobic conditions. Here we mainly studied for depend on pyruvate conditions. The glycolysis take place in a cell of body and enzyme of this pathway present in cytosol. It is very essential pathway for brain which is mainly depend on glucose for energy. यहाँ पे जो भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है मेनली अंडर एरोबिक कंडीशन में हम स्टडी करेंगे तो 8 एटीपी जनरेट होंगे और एनारोबिक कंडीशन देखेंगे देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ 2 ATP. So the ability of glycolysis to provide ATP in absence of oxygen in anaerobic conditions to survive in anoxia conditions. तो ऐसा नहीं ATP तब भी यूटिलाइज होगा व्हेन देर इज अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव इन एनोक्सिया कंडीशन. देर विल ऑल्सो अ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP is observed. The glycolysis process is mainly contain 10 steps process, but it is mainly divided into 3 phase. It is mainly divided into 3 phase. First होगा energy investment phase in which ATPs are utilized. ATP utilized होंगे. उसके बाद आएगा splitting phase जिसमें ATP breakdown होंगे और use होंगे. And then energy generation phase, lastly energy जनरेट होगा. तो जहाँ पे भी यूटिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे मेनली खास करके काइनेज एंजाइम होगा. आप ऐसे भी रिएक्शन को याद रख सकते हो. यहाँ जहाँ पे भी ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज हो रहा है वहाँ पे ATP प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा, यूटिलाइज्ड होगा. दैट टाइम वी आर यूजिंग एंजाइम इज मेनली kinase enzyme. So here the reaction is first we are taking a glucose molecule or 6 carbon containing molecule which is also called hexokinase molecule. So kinase enzyme is responsible for utilization. यहाँ पे जहाँ पे भी utilization of ATP हो रहा है वहाँ पे kinase enzyme use होगा. So first glucose is converted into glucose 6-phosphate molecule add हो रहा है. That time ATP is utilized and converted into ADP. So the glucose is converted into glucose 6-phosphate by hexokinase or glucokinase enzyme. अभी ATP during proceed utilized हुआ है. Now there will be a isomer form. Glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. They are the isomer of each other. So the enzyme used is phosphoisoisomerase. Phosphate group attach हुआ and it is converted into isomer of fructose 6-phosphate.
then 1 ATP again utilized होगा. So fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 biphosphate. दो phosphate के molecule attach होंगे. That time ATP is utilized and converted into ADP. So this is the first step, energy investment phase. नेक्स्ट हमारा जो फेज आ रहा है वो है स्प्लिटिंग फेज. मतलब इट इज डिवाइडेड, द एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू फेज इन विच द अल्डोलेज, जब जहाँ पे भी ब्रेक डाउन होगा जिसको बोलेंगे लाइज और लाइसिस, वहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो भी आप इजीली इस तरह से याद रख सकते हो कि एलेज एंजाइम है, तो इट इज कॉल्ड अल्डोलेज. That aldolase enzyme is converted into dihydroxyacetone phosphate and it is converted to another isomer by enzyme phosphotriose isomerase and converted into glyceraldehyde 3-phosphate. तो ये दोनों 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है जो दो पार्ट में डिवाइड होंगे. इट इज कंटेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. सो द इंटर कन्वर्जन इज ऑब्जर्व एंड इट इज गो टू थर्ड फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, in which the energy is invested. That time the glyceraldehyde 3-phosphate is converted into 1,3-biphosphoglycerate. तो अभी एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन फेज. तो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसको बोलेंगे dehydrogenase. So the glyceraldehyde 3-phosphate is converted into another isomer 1,3-biphosphoglycerate and this 1,3-biphosphoglycerate again converted into 3-phosphoglycerate by enzyme phosphoglycerate kinase. That time the ADP is converted into ATP and another isomer is formed which is converted into 2-phosphoglycerate. They are the isomers और म्यूटेशन प्रोसीजर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे 3 पोजिशन में से सेकेंड पोजीशन पे जा रहा है फॉस्फो मॉलिक्यूल विच इज कन्वर्टेड 3-phosphoglycerate टू 2-phosphoglycerate. तो कोई एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं हो रही है. देर इज अ एंजाइम म्यूटेशन प्रोसेस एंड लास्टली इट इज कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycerate टू थ्रू फॉस्फोइनोल पायरुवेट. इनोलेज रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, किसी भी चीज का रिमूवल होगा उसको बोलेंगे इनोलेज रिएक्शन. सो इनोलेज एंजाइम विच इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल pyruvate. That phosphoenol pyruvate again use kinase enzyme. Here the ATP production होगा यहाँ पे, तो ATP use होगा. Then pyruvate kinase is converted into pyruvate enol form and the spontaneous reaction होगा यहाँ पे, मतलब कि in anaerobic condition होगा. That pyruvate 3 carbon is contained into keto group and enol group. Means कि pyruvate keto और pyruvate enol बनेगा and lactate dehydrogenase is converted into L-lactate. यहाँ पे spontaneous reaction होगा, उसके बाद anaerobic condition होगा तो लैक्टेट प्रोड्यूस होगा. अगर एरोबिक कंडीशन होगा तो पायरुवेट के 3 कार्बन का इनोल और कीटो ग्रुप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगा. तो ये साइकिल पूरा हुआ एक बार. एसिटाइल कोएंजाइम का सिंथेसिस होगा लास्ट में, जो साइट्रिक एसिड साइकिल में भी यूज होगा. तो एक साइकिल बार बार चलेगा तो एनर्जी प्रोडक्शन भी होगा, स्प्लिटिंग फेज भी आएगा, पर एनर्जी स्प्लिटिंग और एनर्जी प्रोडक्शन में इतना एटीपी सिंथेसाइज नहीं होगा. एटीपी जो साइकिल चल रहा है, फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे हम एटीपी गिनेंगे. तो इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 एटीपी. ऐसे साइकिल 2 बार चलेगा. सो दे आर कैलकुलेटेड लाइक, फर्स्ट इज व्हेन ग्लूकोज 6-phosphate is converted into glucose 6-phosphate by enzyme glucokinase, it is utilized 1 ATP. 1 ATP आगे अपने रिएक्शन में देखा यूज हो रहा है. that fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6 biphosphate by phosphofructokinase enzyme. That time also 1 ATP is utilized. And the lastly glyceraldehyde 3-phosphate is converted into diphosphoglycerate. That by enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenation होगा. That is utilized mainly NADH में से NADH2 जनरेट हो रहा है. तो ऐसा साइकिल 2 बार चलेगा. तो एक NADH से 3 ATP जनरेट हो रहा है. इट मीन्स 2 बार साइकिल चल रहा है. दैट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इंटू 3-6 ATP. एंड देन 1,3-biphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate by enzyme phosphoglycerate kinase, which is also utilized 2 ATP. And phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate kinase, is also utilized 2 ATP. तो टोटल 10 ATP जनरेट हो रहा है, जिसमें से 2 यूटिलाइज्ड हो रहा है. तो लास्टली इट इज सिंथेसाइज्ड 8 ATP. So these are the process of glycolysis cycle, which is converting glucose to pyruvate or lactate with production of ATP. So here we can use how to calculate ATP and synthesis of glycolysis. Okay.
Fine. Thank you.